So hi everyone, welcome to you all in my another video, and today video is about AYUSH. If you have AYUSH one of the degree and you want to migrate to Australia, so what is the process to migrate to Australia, what are the job opportunities in Australia, and what is the whole process, and what is the scenario currently in Australia. So AYUSH means that you did your bachelor degree in Ayurveda, Unani, or any of the those like homeopathy or BYNA, whatever degree you have in AYUSH, so you can migrate to Australia. This is in Australia government, they give this called complementary health therapist. It means in that they include all of them, so there is no separate provision for them like Ayurveda or Unani or all those things, because they are not included in this visa. So this visa is mostly if you if you are from a acupuncturist, you are a homeopath, you are a naturopath. So naturopath, basically if you are a BAMS doctor or you are a BUMS doctor, so you can apply in the naturopath, And another one is that traditional Chinese medicinal practitioner. So jo log some of them are from the other country, they might be from this degree. This degree also very important in Malaysia, in China, Thailand. Those countries, there is a bachelor degree in traditional medicine, traditional Chinese medicine, so they can migrate on this degree. So there are some other things like dance therapist, drama therapist, hypnotherapist, music therapist, and play therapist, and so many occupations in this list. So this is called a group of the occupations, and this is called 2522 complementary health therapist. So if you are planning to migrate to Australia or New Zealand, so this is the same occupations you can migrate either to Australia and New Zealand. So what is the process for this? We are so first that as you know, in Australia or New Zealand, if you want to migrate here, so there is a provision that based on your points. I mean आपके point का base का system होता है ऑस्ट्रेलिया में. तो point base basically they give on your education, your experience, your English requirement, or you are a single or you are married, and so many factors, and your age is very important. If your age is like below 40 years, so you can easily migrate, but if you are more than 40 years, so it's difficult for you. So I'm not going to discuss here the point based system here, but the process for the complementary health therapist or AYUSH doctor, you can migrate to Australia. So the first step is that you have to go for a skill assessment. So skill assessment body in Australia, this is called VETA assess, VETASSESS. VETA assess basically a body to assess your degree and your experience. So when you are migrating to Australia, this says that your degree must be have a skill assessment 1, level 1 they required for this visa. It means that you have a bachelor degree plus 5-year experience, or you have a diploma or something more than 5-year experience, so they are recognized. But most of the chances, if you have a BAMS, you did your BUMS, you did your BHMS, कोई भी ऐसे you did any degree, then there is a 5-year experience in India, you practice, then you can migrate to Australia as a complementary health therapist. So for the skill assessment, what are the document you required? Basically, you required one photograph, then you require proof of identity, means your passport, and then you need to show your degree and your certificate. Basically, transcript you need to take from your university, and professional license is very important. You are working in Ayurvedic doctor or a Unani doctor in India, that letter license you have to show. And another thing, you must be registered with the Australian Ayurvedic Association. उनका जो लेटर है वो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा. और इफ़ यू आर डॉक्यूमेंट नॉट इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करवा लीजिए. कोई बहुत सारे टाइम पे जो डिग्री या आपकी हिंदी में लिखा हुआ है, या संस्कृत में है, या उर्दू में है, या उस टाइप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में है, तो आप लोग उसको चेंज करवा सकते हैं. फिर इसकी जो फीस होती है बेसिकली ज़्यादा नहीं है, इज़ अबाउट $350 के आसपास AUD जो उसकी फ़ीस है. तो इंडियन रुपीज़ में अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें अराउंड में या 18-20 हज़ार के आसपास में इसकी फ़ीस हो जाएगी. तो फिर आप लोग इसको
अप्लाई कर सकते हैं अपने आप से या किसी एजेंट की हेल्प से. सो व्हेन यू आर माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया, दिस इज इफ you are a like medical doctor or you are a nurse or you are a pharmacist. So these professions like worldwide they have a standard for that. For example, you need a 4-year degree, then you have to go skill assessment, then you have to go examination, then you can migrate to Australia or any other country. But this complementary health therapies or AYUSH doctor, they are not standardized. So in Australia that BAMS degree is not recognized. Basically there is no separate provision for them to practice in Australia. So जो भी doctors हैं इंडिया में, if you are from one of the doctor in India, then you cannot practice directly in Australia. Australia में they are not recognized these therapies, AYUSH therapies. इसका the main reason that in Australia the healthcare system is free for a patient. So patient do not need to pay for a doctor fee, or he do not pay to for medication and all those things. So because these are the paying by the government, so if any patient goes to a physician, then physician will charge to the government, not to the patient. But these AYUSH, if you want to practice in Australia, you can practice here, but you have to charge to a patient. For example, you have to charge like your fee is $50 or $100. Then patient, he has to go give to you from his own pocket, or either he have a health insurance. There is some private health insurance also. So they can they have to pay to the insurance. But right now last 2 years they remove basically the Ayurveda practice, that is not in the list as well. So the right now जितने भी जो पेशेंट है, पेशेंट अपनी जेब से ही need to pay, he has to pay from his own pocket. And another important, and that in Australia there is about 2.5% population in Indians. I can say 3% Indian population living in Australia. We are like those are citizen, PR holder, and other visa holders, so we can say 3%. But if we are comparing with the Chinese counterpart, there is about 9%. So if you go in any area, lot of Chinese medicine clinics you can find. But in Ayurveda, Unani and Siddha, homeopathic, they are very less. But most of the Indians, I see many of the groups, they always ask that where I can get this medicine. Is there any Ayurvedic doctor? Is there any homeopathic doctor? Is there any Unani doctor? तो बहुत टाइम से लोग ऐसे ढूंढते रहते हैं, और पीपल आर विलिंग टू पे देयर फ्रॉम द ऑन पॉकेट. मतलब यहाँ पर जो बेसिकली जितने भी लोग हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल. तो इवन इफ दे आर पेइंग फ्रॉम देयर ऑन पॉकेट, सो दे डजंट माइंड. तो स्कोप है यहाँ पर, पीपल आर देयर, so you can migrate to Australia. But there is a problem in skill assessment. So in a skill assessment, they're saying that you should only apply for the skill assessment if you have been referred to us for a qualification assessment by either a professional association or private health insurance. मतलब ये कह रहे हैं basically you can migrate to Australia, you can skill assessment only you can request once any association has to give to you like you can go for skill assessment. For example, in Australia there is a Ayurvedic association is here, so if you contact them, so what is the process for them? If you are practice already in India, you did your BAMS or you did 5-year experience in India, now you want to migrate in Australia, you are already in Australia, so you have to go or practice at least 200 hours with any registered Ayurvedic doctor. तो डॉक्टर के अंडर में आपको at least 200 hours का ट्रेनिंग करना पड़ता है. After that they will give you a certificate and they will give you might be a letter, and then after that you can apply for skill assessment. So if you are in India basically and you are trying to migrate to Australia, it is like impossible right now. And I'm not a lawyer basically, I'm not a agent, but जो information मुझे मिल रही है based on that I'm giving to you this scenario. तो आपको एजेंट से बाद में मिलना होगा. मगर यहाँ पर जो है मैंने जो बताया आपको कि देर इज़ नो नीड, आपका मेन प्रोसेस क्या है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए और यहाँ पर किसी डॉक्टर के अंडर में आप 200 आवर का ट्रेनिंग कीजिए, और फिर आप जो है इनके मेंबर बन जाइए, जो एसोसिएशन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदा एसोसिएशन का, और उसके बाद नाउ यू कैन गो फॉर स्किल असेसमेंट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा, दोज काइंड ऑफ थिंग, है ना. तो ये प्रोसेस है ऑस्ट्रेलिया में. तो आप डायरेक्टली माइग्रेशन नहीं कर सकते. तो
अब प्रॉब्लम आता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑन विच वीज़ा आई कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया. इफ यू वांट टू कम ऑस्ट्रेलिया यू हैव ए 2-3 ऑप्शंस बेसिकली. फर्स्ट दैट यू कैन कम ऑन ए स्टूडेंट वीज़ा, और इधर फॉर एग्जांपल योर पार्टनर, योर हस्बैंड और योर वाइफ ऑलरेडी हैव ए जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, और your husband or wife can come on a study visa, and then you can process, you can practice, because when you are coming on a student visa, either you or your wife or your husband, so you have a legally full work right in Australia. तो दोनों में से किसी के पास भी एक वीज़ा है, हस्बैंड के पास या वाइफ के पास, उसके बाद और जो डिपेंडेंट को जो है फुल वर्क राइट रहता है ना. तो वो जो दूसरा बंदा है वो अपना जो है प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकता है. इधर आप और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं पर्सनली, अगर आप खुद से आते हैं तो फिर आप जो है बहुत सारे जो कोर्सेज हैं यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि MPH हो गया, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ. मगर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी जो लिस्ट है PR की उस लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको इसी रूट पे जाना पड़ेगा. आपको जो है 200 आवर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू गो फॉर स्किल असेसमेंट, देन यू कैन ट्राई फॉर द माइग्रेशन. बट देयर इज सम अदर गुड कोर्सेज यू कैन गो. फॉर एग्जांपल यू कैन गो मास्टर ऑफ नर्सिंग. आई ऑलरेडी मेक 2 वीडियो ऑन दैट, इज अबाउट 50 लाख रुपये बेसिकली द फी इंडियन रुपीज़. सो उसके बाद में आप लोग यहाँ पे वो बेस्ट कोर्स है आपके लिए, एंड यू कैन गेट PR ऑन दैट. अनदर बेस्ट सिनेरियो, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, you do not want to practice as an Ayurvedic practitioner, now you want to practice as a एलोपैथी. तो एलोपैथी में अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आप जो यहाँ पर MD होती है 4 साल की, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली. कोई भी बैचलर डिग्री किया हुआ होता है साइंस में या हेल्थ साइंस में, उसको ईजिली यहाँ पर एडमिशन मिल जाती है MD के अंदर. तो आप लोग उसके कर सकते हैं, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, फिर आप जो है जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं ना. तो ये है ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस यहाँ आने के लिए. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने कई सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं ऑलरेडी, और आई ऑलरेडी मेक वन वीडियो ऑन one of Dr. Vishal, and Vishal also gave some of the insight, so you must watch that video. Already given the link in the description. So I mean, you know how he migrated to Australia, and he also gives some advices in that video, when you are migrating to Australia. अब बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में सैलरी कितनी मिलती है, हाउ मच द सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया एज ए आयुष डॉक्टर. सो आयुष डॉक्टर, बट बेसिकली इफ़ यू आर ए नर्स, फार्मासिस्ट, allied health science, basically salary is about 80,000 to 100,000 yearly, and but if you are a doctor may be 150 to 200k. is a general physician, I'm saying those are MBBS. so so 100,000 के आसपास जो है सैलरी में 50 लाख के आसपास सैलरी होती है यहाँ पर जो है एक साल में. पर टैक्सेस एक्सेस काट पीट के भी आपको जो है अराउंड में जो है 2.5 से 3 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे. तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.